Everyone. Good morning, sir. बेटा यही थी लास्ट स्लाइड हमारी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. Morning, sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बेटा दिस इज आवर लास्ट स्लाइड. Yes, sir. Yes, sir. So we have four methods: percentage method, proportionate method, total outlay method और total revenue method. सर आपकी Geometric वॉइस method. काफी लो आ रही है. Okay. Percentage method और proportionate method, total outlay method और total revenue method, geometric method or point method. And last one is the arc elasticity of method. Arc elasticity of method. So first one, the point. इसको बेटे हम graphic method भी कह सकते हैं. First one is the point elasticity of method. Point elasticity of method. So this method suggested by Dr. Marshall is used to find elasticity of demand at a particular point.
on a demand curve. Point method for measuring price elasticity of demand is also known as geometric or geometrical method. So it makes use of derivative rather than finite change in price and quantity. So according to Left-Pitch, elasticity computed at a single point on the curve of infinite small change in price is point elasticity. So point elasticity of demand is different in different points. The demand curve. So it is lower sector, upper sector. So elasticity at a point equal to lower sector of demand curve divided by upper sector of demand curve. Lower sector of demand curve divided by upper sector of demand curve. Please write down. And this is basically the explanation of formula. Draw a tangent AB on the demand curve at point R. Lower segment divided by upper segment. Slope of AB equals to OB slash 0A. Oh, A. So you have AB is a demand curve tangent line and OB is quantity demanded and OA is price. So there are triangles, a bigger one AOB, AMR smaller one, and NRBR similar. So OB slash OA equals to NB and RN. And when you people can use this formula, you got your point in between A to B. A to B means E is equal to 0, greater than 1, less than 1, equal to 1, or elasticity is infinite. I have already tell you elasticity of price is equal to 1, greater than 1, less than 1, and infinite or equal to 0. अगर बेटे आपका थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होता है और चाहे वो एक पैसा ही क्यों नहीं चेंज हुआ हो, तो इट मीन्स उसका परसेंटेज पर या डिमांड का पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि पहले आप 99 रुपीज का अगर पेट्रोल ले रहे थे तो 1 रुपये आप वापस नहीं लेते थे, उसको कहते थे 100 का डालो, तो 1 लीटर से कुछ एक पॉइंट आगे डलता था। लेकिन अब अगर 100 का हो जाएगा तो जो सा छोटा सा एक पॉइंट है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो देयर इज अ चेंज। नेक्स्ट आता है percentage method. Next one is the percentage method. So the next method of measuring the price elasticity of demand is the percentage of proportionate method. This method was
propounded by Dr. Flex. Hence, it is also known as Flex method. It means elasticity of demand by using mathematical mathematical calculations. It is therefore also known as mathematical method. According to this method, the elasticity of demand can be measured with the help of that formula. And you have that formula: percentage change in demand, percentage change in price. Demand means the quantity. And further we have change in quantity demanded, that is Q2, and original demand, or change in price, original price. So change in quantity demanded, original demand, change in price or original price. Okay, ji? Here we have the percentage, and after that, next one is the arc elasticity of demand. The point method or of measuring price elasticity of demand is useful only when there are a little change in price and quantity. So it is measure of the average responsiveness to price change shown by demand curve over some definite portion between 2 points on a curve. The elasticity obtained between midpoint or average price and quantity are used is called arc elasticity. According to Watson, arc elasticity is elasticity at midpoint of arc of a demand. So the formula is related to that is original quantity minus new quantity, original quantity minus new quantity divided by original quantity plus new quantity. And further, original price minus new price and original price plus new price. प्राइस तो अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो 100 थी, ओरिजिनल क्वांटिटी इज 100 और न्यू जो है वो 140 है या 150 जो भी आप लिखना चाहें. सो 100 माइनस 140, 100 प्लस 140. So that is minus 40 and 240. और नीचे जो आपका प्राइस था पहले 10 था अब 8 है, तो 10 minus 8, 10 plus 8, so 2 and 18. So your answer, when you people got and put it into figure, you got your answer minus 1.5. And that 1.5 means that you inverse relationship between price and the quantity.
on a arc point. So P0, P1, and further you have at arc elasticity is calculated, जो मैंने अभी आपको सारा बताया. We'll put in those figures in that formula and computing price elasticity. ठीक है जी. So you got your answer computed, change in price 10 or 14 and 1 rupee and 0.50 paisa, and you got your quantity जो change हुआ 333 and price minus dot 667. So elasticity computed the ratio and you got your answer is 2 divided 1 divided by 2. And you got your answer is 0.50. Next one is the total revenue equals the price. P means the price and total revenue TR, and Q means the quantity. So total revenue equals to P multiplied by Q. So total revenue increases as prices increases if demand is inelastic, and total revenue decreases as prices increases if demand is elastic. So total revenue does not change if elasticity of price is equal to 1. So greater than 1 and less than 1, and not change as prices increase if demand is unit elastic. So that is your elasticity of demand, direction of the price change, effect on total revenue. अब inelastic में क्या है कि अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा. अगर पहले आप 20 रुपए का दूध का पैकेट बेच रहे थे और आप 40 का बेचना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस पे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. और अगर आप प्राइस कम करेंगे यानी 40 रुपए का था 20 कर देंगे तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली प्राइस के साथ डिक्रीज कर जाएगा. और इनइलास्टिक में क्या है कि अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया, आपने 20 से 80 कर दिया दूध का पैकेट, तब क्या होगा, लोग दूध कम खरीदना शुरू कर देंगे, क्वांटिटी कम खरीदना शुरू कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर आप क्या करेंगे, कम प्राइस कर देंगे तो हो सकता है लोग उसी चीज को ज्यादा खरीदना शुरू कर दें, then automatically your price your revenue should be increased, क्योंकि उसको लोग बल्क में खरीदना शुरू कर देंगे कि बाद में कहीं प्राइस बढ़ ना जाए तो अभी हम स्टोर करके रख लें. यूनिटरी में एनी चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, आप जितना पहले डलवाते थे ऑफिस जाने के लिए, आप आज भी उतना ही डलवा रहे हैं. ठीक है जी. सो दीज आर सर्टेन डायरेक्शंस. Please made that is your demand schedule and total revenue. एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बेटे, इसलिए हमने इस पूरे फ्लो चार्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में डाला है. The price elasticity of demand changes along the demand curve. तो हमने आपको बोला था कि अगर प्राइस आपका कुछ भी नहीं है, जीरो है और 0 पैसा लोगों को देना पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में डिमांड भी है, तो रेवेन्यू आपका 0 है. बट इफ द प्राइस इज 1, सो डिमांड इज 9 एंड टोटल रेवेन्यू इज 9. तो आप इसको एंड तक जाएंगे, प्राइस बढ़कर 10 रुपीज हो गया, लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं. जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है. जब डिमांड ही नहीं है, देन हाउ यू पीपल कैन जनरेट अ रेवेन्यू. So all those 5 points
elasticity is equal to 1, 0 to 1, greater than, less than 1, or infinite. You have seen in the price or a total revenue. So this is elastic in a different color, light blue. Demand is elastic. A higher price reduces total revenue. ठीक है जी. और दूसरी तरफ inelastic है. Demand is inelastic. A higher price increases total revenue. ठीक है जी. So please note that. Then we will move further. Again, this is example. अगर आपने पिछला example कर लिया है, then you does not need for this example total revenue and price elasticity. Elasticity is equal to 1, greater than 1, less than 1, 0 or infinite. Total revenue for airlines we have seen according to the revenue. Revenue कहाँ तक आप generate कर रहे हैं? जब तक उसका price आपके सामने 1000 पर टिकट था तो क्वांटिटी लोग 100 ले रहे थे और 200 ले रहे थे एंड योर रेवेन्यू इज 200. जैसे जैसे प्राइस कम होता चला गया और एक लेवल तक पहुंच गया, then you have equilibrium point, that is elasticity is equal to 1 and that is a higher point and your revenue is 600 rupees. After that it should be diminishing. वो नीचे जाता हुआ चला जा रहा है. क्वांटिटी जरूर बढ़ी, लेकिन जब आपने प्राइस देखा कि प्राइस ही 100 रुपीज रखा हुआ है तो आपका रेवेन्यू जो है उससे बहुत कम जनरेट हो रहा है. तो नेक्स्ट मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. नेक्स्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. So this method was evolved by Dr. Marshall. According to this method, in order to measure the elasticity of demand, it is essential to know how much and in what direction the total expenditure has changed as a result of change in the price of good. So this method also measure elasticity of demand and greater than unity, equal to unity or less than unity. So when we people can talk about the greater than unity, the total expenditure increases with a fall in the price and decreases with a rise in price. Elasticity is said to be greater than unity. So when the price of commodity is 10, demand is 0. And when the price is 9, the demand is 1 and the total expenditure is 18. So it is elasticity of demand is greater than 1. So that is elasticity, price increases, price decreases. Price increase करेगा तो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा. और यूनिट इलास्टिक में देयर इज नो चेंज. इन इलास्टिक में प्राइस राइजेस और प्राइस डिक्रीजेस. तो आप इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं. प्राइस लिख दें ऊपर और प्राइस लिखने के बाद आप ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के साथ चल सकते हैं. अगर इसका प्राइस 10 रुपीज था और डिमांड ओनली 1 क्वांटिटी, सो टोटल एक्सपेंडिचर 10 मल्टीप्लाई 1 10 आ गया. 9 प्राइस हुआ, क्वांटिटी 2 हो गई. 9 मल्टीप्लाई 2 18.
8 multiply 3 24, 7 multiply 4 यानी प्राइस कम हो गया, डिमांड 4 हो गई और एक्सपेंडिचर कम हो गया, 7 multiply 4 28. Similarly 6 multiply 5 30, 5 multiply 6 30, that is a break even point equal to 1. उसके बाद जैसे जैसे आपका प्राइस कम होता चला गया, क्वांटिटी बढ़ती चली गई और एक्सपेंडिचर जो था आपका टोटल कम होता चला गया. So that is your total expenditure curve. Total expenditure curve. ठीक है जी. So next topic आता है हमारे पास इसमें practical importance of the concept of price elasticity of demand. Practical importance of price elasticity of demand. So the concept is helpful in taking business decision. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए फ्यूचर पॉलिसीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक. इट कैन प्रोवाइड यू हेल्प हाउ मच मनी फॉर अ न्यू venture you people required, what type of technology you required, what type of policies. Importance of concept in formatting tax policy of the government. और गवर्नमेंट को किसमें हेल्प करता है कि हमने किस तरीके की टैक्स पॉलिसीज बनानी है जो कि लोगों को फायदेमंद रहेंगी और जिससे हमें मैक्सिमम टैक्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डिटरमिनिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Factors of production, a new technology. If you people can bring a new technology and you have money in your hand and profit in your hand, then you people can bring a new technology from outside, or you can do a research on a new technology, and new production technology can provide you a better future or enhancing your money collecting in terms of tax. To determine the terms of trade between two countries. आप बेटे ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में देख रहे हैं. अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं कंट्रीज के साथ तो आपकी ट्रेड वॉर नहीं रहेगी. वो अगर आपको मौका दे रही है या आप उनको मौका दे रहे हैं, आपका सामान उधर जा रहा है और उनका सामान इधर आ रहा है, then automatically very less trade war is there and economy is flourishing. Determination of rate of foreign exchange. Rate of foreign exchange आप अगर डॉलर में करते हैं तो उस वक्त इंडिया को नुकसान होता है, लेकिन अगर बाहर फॉरेन कंट्रीज डीलिंग जो है वो रुपीज में करती हैं, then you people are benefited with that. So foreign exchange, जो डॉलर है वो हमें, या जो पॉन्ड्स हैं ये हमें एक जो उनका रुपया है कितने का पड़ रहा है, आपके 70 रुपए के बराबर अगर उनका 1 रुपया है, देन ऑटोमेटिकली आपको फायदा कम होने वाला है. और अगर वो आकर आपको ये कहता है कि आप हमारे से रुपये में डील करें, तो रुपये में जब आप डील करेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा. जैसे ही आप अमेरिका से डील करते हैं, वो कहता है जी आप डॉलर में करें. आप हमारे से शिप ले रहे हैं तो आपको 400 या 4000 डॉलर में पड़ेगा. अब अगर यही इंडिया की हम बात करेंगे तो 4000 रुपए में पड़ेगा. So automatically that is a difference between in terms of rates of foreign exchange. When we people got independent, तब ये सब कुछ बराबर था. 1 रुपया हमारा था तो 1 रुपया ही डॉलर था. लेकिन आज आप देखते जा रहे हैं ये सब कुछ चेंज होता हुआ
चला जा रहा है for nationalization of certain industries. Our previous governments are doing number of things. They are doing the liberalization, nationalization of industries and globalization. लेकिन अभी आप देख रहे हैं from our this government, that government is selling our government companies to the private. और जब आप उठा के पुरानी कंपनीज का बेटे you got a data, you can see those companies are in the profit. और वो प्रॉफिट में चल रही थी गवर्नमेंट कंपनीज। अब पेपर मिल्स को देखें जो असम में है, असम में लगी हुई है, 2014-15 तक वो प्रॉफिट में थी, लेकिन जैसे ही उनको बंद कर दिया गया, so people does not have a choice. उनको उनका पैसा नहीं मिला ना उनको, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज थी, इसका मतलब उनका पीएफ भी था, उनके मेडिकल बिल्स भी थे, उनकी सैलरीज भी थी। People does not got and people do a suicide over there a period of time of 4 to 5 years. In economic analysis, the concept of price elasticity of demand helps explaining the irony of poverty in the Middle East. Yes, anybody tell me इस last point का क्या मतलब है? Elasticity हमें क्या बताने की कोशिश करती है? Anyone, कोई मुझे बताना चाहे? Yes. कौन बताना चाहेगा बेटा? Last point. Yes. Anyone? Yes. कोई बताना चाहे बेटे? क्या मतलब है? Yes. कोई भी? Anyone? Last point. Anyone can explain? So, price elasticity basically says that something is out of poor's range, even if it is in plenty. So, even if it's in plenty, the poor can't afford it because it's out of the range of their budget. बिल्कुल ठीक है। तो आप कुछ ऐसा पॉइंट सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से इसको हम बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं? So, subsidizing, but in a limited. इन अ लिमिटेड वे। अभी आप देख रहे हैं सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने, पहले आपकी सब्सिडी चलती थी आपकी ऑयल पे गरीबों के लिए, वीट पे और शुगर पे चलती थी बेटे, और आपके राशन sir. कार्ड बनते थे, सिलेंडर पे भी चलती थी, और तब लोग खुश थे। लेकिन आज आपने देखा गवर्नमेंट ने सारी सब्सिडी हटा दी। क्या क्या रेट चल रहा है अब? सिलेंडर का क्या रेट है बेटे? पहले 450 था तो आप लोग सिलेंडर लेने की, और आज क्या रेट है? यस 800 आज something. क्या? हाँ जी, Near about 900. हाँ 960 रुपीज के आसपास है। और आज आप लोग कहते हैं सर हम बहुत खुश हैं। बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि सर लाइन नहीं लगती। उसकी वजह ये नहीं है कि बेटे हमारा सिलेंडर का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है। जो आपने फ्री सिलेंडर बांटे थे ना लोगों को, जब वो 450 का था, तब लोगों ने खरीदे, एकदम से सेल्स इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही वो डबल हो गया और उनकी जॉब्स भी चली गई कोरोना पीरियड में,
और रेट जो चला गया 960 पे, और उनकी अगर दिहाड़ी 200 रुपए है, तो किस तरीके से वो सिलेंडर को अफोर्ड कर लेंगे। तो जहां जहां आपने और ज्यादा एजेंसीज दी कि लोग खरीदने आएंगे, लोगों ने उसको लेना ही बंद कर दिया, और वो वापस जो आपकी वुडन स्टिक्स होती हैं उनके साथ खाना बनाना शुरू कर दिया। सिमिलर टू द ऑयल, कुकिंग ऑयल, और इवन योर ट्रांसपोर्ट ऑयल, उसमें भी लोग अब अगर 4 गाड़ियां तो 4 नहीं जा रही हैं घर से बाहर, 1 या 2 जा रही हैं। हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं और हम लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, हम हायर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, विच इज वेरी स्मॉल पोर्शन इन इंडिया। Middle class is on a higher number and lower middle class is also in a higher numbers. So you people can think about that policies are appropriate. हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं, हम उसका पॉजिटिव दिखाना शुरू कर देते हैं। जब गवर्नमेंट ने अपने आप को पॉपुलर बनाना हो, देन गवर्नमेंट शोज दी पॉजिटिव इंटेंट, नॉट नेगेटिव। नेक्स्ट आता है बेटे हेडिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So please write down the income elasticity of demand. इनकम इलास्टिसिटी यानी पहले प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, अब आपकी इनकम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, विच इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of the quantity demanded for a good or service to a change in income of the people. यानी आपकी इनकम बेटे पहले 10,000 थी अब 20,000 होगी, या पहले 20,000 थी अब 10,000 होगी, उसका इम्पैक्ट डिमांड पर क्या पड़ता है। डिमांडिंग द गुड, ठीक है जी। एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट विच क्वांटिटी बॉट changes as a result of changes in the income of the consumer. Other things bring equal. So according to the Watson, income elasticity of demand means the ratio of percentage change in the quantity demanded to percentage change in income. ठीक है जी, percentage change in quantity demanded to percentage change in income. So the types of income elasticity demand. So the types of income elasticity of demand is positive income elasticity of demand, negative income elasticity of demand, zero income elasticity of demand. ठीक है जी, 3 तरीके की होती है। So positive, when the amount demanded of a commodity increases with increase in income of consumer and decreases with decrease in income. यानी इनकम बढ़ने से मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम कम होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद आता है नेगेटिव, when the amount demanded of a commodity diminishes with an increase in the income of the consumer and increase with a fall in income. The income elasticity of demand is said to be negative. Income elasticity of demand is negative in case of inferior goods known as given goods. ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ, when the amount of demand of commodity diminishes with an increase in the income of the consumer and increases with a fall in income.
ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटे लास्ट जीरो, ये आपका पॉजिटिव वाला आ रहा है बेटे, इसको बना लें। अब पॉजिटिव में आप देख रहे हैं ये आपका बन गया बेटे। पॉजिटिव कैसे है कि पहले आप ए और बी ले रहे थे, यानी इनकम आपकी ए थी, क्वांटिटी बी थी। पॉजिटिव कैसे हो गया कि इनकम बढ़ी तो पी और एस हो गया। और अगर इसको हमने इसी में ही कम में दिखाना है तो पहले पी और एस थी इनकम, अब कम हो गई तो ए और बी हो गया। दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी और वन, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी और वन, इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटी और वन। नेगेटिव आ गया बेटे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको नेगेटिव, दैट इज अ नेगेटिव। ठीक है जी, इसको बना लें बेटे, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज नेगेटिव। उसके बाद आता है जीरो, when the demand for a commodity does not respond to change in income of the consumer, the income elasticity of demand is zero. Generally, goods which are very cheap and important like salt, example लिख लें बेटे, important like salt, newspaper, candles, buttons, kerosene oil, the demand is completely income elastic. When the demand for a commodity does not respond to change in income of the consumer, यानी किसी तरीके का चेंज आपको नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ, यानी सॉल्ट में किसी भी तरीके का आपकी इनकम बढ़े या कम हो, सॉल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न्यूज़पेपर पे अब ये नहीं कि आपकी इनकम बढ़ गई है तो आपने 50 न्यूज़पेपर मंगवाने शुरू कर दिए। ठीक है जी, ये नहीं कि अगर आपको एक कैंडल की जरूरत है तो आपने बोला मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं कैंडल के 50-60 डब्बे मंगवा लूं। ठीक है जी। बटन्स हैं जो आप शर्ट पे लगाते हैं, ये नहीं किया कि इनकम बढ़ गई है तो आपने क्या बोला कि मैं बहुत सारे बटन्स जो हैं वो मंगवा लूं। ठीक है जी। सो जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ऑल दीज थ्री डिमांड्स रिप्रेजेंटेड इन वन फ्लो चार्ट और अ ग्राफ, ऑल इनकम ग्राफ्स प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, इसको बना ले, ऑल इनकम ग्राफ्स represents. So this is a formula which we people are using for the income elasticity of demand. Proportionate change in demand, proportionate change in income. Proportionate change in demand और proportionate change in income. तो ओरिजिनल डिमांड क्या थी और ओरिजिनल इनकम क्या थी उसके बाद। ओरिजिनल डिमांड proportionate change in demand divided by original demand, proportionate change in income divided by original income. So that is your change in quantity, in the quantity, original quantity demanded, change in income or original income. So further you have an example. When the income of consumer is 2,500, he purchases 20 units. When the income is 3,000, he purchases 25 units. Your answer is
That is your answer. So 5 divided 20 plus 500 divided 2500 and you got 1.5. So therefore the elasticity of demand is 1.5 is more than 1 is more than 1. So here I will stop my lecture, and in this week I will provide you a one topic of assignment, and you have to send back to a class, Google Class. I will send you the link. Any question? Sir, I still have the same request that can you please share the PPT because the notes you send they don't include the initial topics you covered. So we need the PPT to revise. Initial टॉपिक्स आई विल ट्राई बेटे मैं आपको उनके भी नोट्स भेजता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जैसे यू हैव ए प्रिंसिपल्स एंड द सेक्टर्स ऑफ Yes, यही रह sir. गया बेटे So you can actually send the PPT till where you've teached us so far and continue teaching.